हेलो। हाँ सर। वो यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं ऑडियो का। अच्छा ठीक। हेलो। हाँ सर। वो यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं ऑडियो का। अच्छा ठीक। शशांक सर। I'm there. I'm there. Okay, sir. Honorable Vice Chancellor, sir, and Pro Vice Chancellor, sir, have joined. Okay. Okay. Namaste, sir. इसको कैसे करेंगे? देखिए तो आपको पता है ये स्क्रीन पे लेना है एक ये वर्चुअल बैकग्राउंड को जल्दी ठीक है, वैसे एक बार ले लीजिए ना। हाँ। जल्दी से हेलो। वो मेरे पास नहीं है सर, वहीं से है, तो कर देंगे। नहीं नहीं, अर्चना मैम वहीं जा रही है। नहीं नहीं, वो आई है मेरे पास। नहीं, वहाँ पे आ रहे हैं जी। मैम जा रही हैं। ये स्क्रीन पे लेना है।
नहीं है सर, वहीं से नहीं, आसाम वहीं जा अरे जल्दी आओ ना बेटा, 2 मिनट में अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो जल्दी आइए, जल्दी। हेलो हेलो। सुमित्रा मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके
सभी को नमस्कार। हमारे चीफ गेस्ट भी आ गए हैं, चतुर्वेदी सर, जनरल चतुर्वेदी इज आल्सो अवेलेबल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम। वाइस चांसलर साहब भी आ गए हैं, देव साहब, डॉक्टर देव इज आल्सो देयर। हमारे प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद जी भी, यूसीटी के डायरेक्टर, ही इज आल्सो अवेलेबल। बाला जी भी अवेलेबल हैं और हमारे बालकृष्ण बरनवाल जी भी अवेलेबल हैं, मुकेश भट्ट जी हैं, मिस्टर आर्यन सिंह हैं, सोमन लाल जी भी हैं, हमारे स्पेशल इनवाइटी। आप सभी लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। और अर्चना जी आ गई हैं, जो हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत कराएंगे। जी मैम, सभी लोग, अब हम लोग सभी उपस्थित हैं, आप कार्यक्रम शुरू कर सकती हैं। सर, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन जुड़े कि नहीं? नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। अच्छा, एक बार उन्हें पूछ लें। सुबह बात हुई थी तो बोले थे 3 साढ़े 3 बजे तक जुड़ जाएंगे। अच्छा, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए उनको। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे वाइस चांसलर साहब की है, तो उनके परमिशन से कार्यक्रम शुरू करें आप। Yeah, we can start. Arun. Namaskar. A very good afternoon and warm welcome to Honorable Vice Chancellor Dr. Mukund Narayan Bhave sir, our chief guest of today's program, Lieutenant General V.K. Chaturvedi sir, Dr. Arun Kumar, Director, Department of Higher and Technical Education, Mr. Shashank Shekhar Gauryar, Chairman, Cybervidyapeeth, Mr. Shoman Mukherjee, SPISO Finance Bank, and our Director, Dr. Kameshwar Prasad sir. Thank you all for joining in this historical event of Memorandum of Understanding signing ceremony on cyber defense training and education, which is jointly organized by University College of Engineering and Technology, Vinoba, Bhave University, Hazaribag, and Cybervidyapeeth Foundation. Again, a warm welcome to all present here. Now, I would like to request Professor Arun Kumar Mishra sir for welcome address. Sir, please. Thank you, ma'am. Good afternoon, one and all. It's really a great pleasure for me to welcome all the distinguished guests present on the historic occasion. We are going to sign an MoU with Cybervidyapeeth. On behalf of Vinoba University, I welcome you all in this event. As per the future prediction, we are going to listen from the experts also that cyber security is going to play a vital role in India's economy. When we talk about university and education imparted by university, it's not only just imparting the knowledge, but also to look after the challenges, the new opportunities for creating the knowledge. And I am really very pleased that under the current leadership of our Honorable Vice Chancellor and our Pro Vice Chancellor Sir, and the team of VBU is trying hard to make such an environment in our university, in our campus. As we all know, technical education is going to play a crucial role in developing our nation and making India as a global knowledge leader. What is happening right now, as discussed earlier also with the experts from Cyber Vidyapeeth and other professionals, in last few decades we have seen many folds growth in the number of institutions providing technical education at different levels.
But what is happening, the industry demand and the technical knowledge that we are imparting, there exists a gap, and we are going to tap this opportunity. We are going to bridge that gap by introducing some innovative courses like cyber defense and all other things in area like artificial intelligence and machine learning, IoT and big data and data analytics. So ultimately the aim is that we have to provide an opportunity for our student in this region to be aware of the skill set that are needed for the career growth and also from the perspective of nation building. So in this occasion, we are going to make history becoming the first in this region to introduce such kind of course. I once again welcome all academicians, all participants, all students of VBU and other respected institutions, faculty members, officials, so that we can go one step further and we strive to make success by signing this MoU and making this project a success by introducing the course latest by July 2022 with the approval of competent authority. Once again, I welcome you all, sir, on this ceremony. Thank you. Thank you. Now, it was the lamp lighting ceremony. Ma'am, your voice is not audible. Uh, hello. So now am I audible? Yeah, yeah. Okay, so now moving towards the lamp lighting ceremony. नमस्कार आप सबों को। आज के दिन के शुभ अवसर पे लैंप लाइटिंग तो हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं, जस्ट मन में प्रणाम कर लेते हैं और आगे का कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। Okay. Sir, the next is from our special invitee, Dr. Arun Kumar, sir, but I think sir is not here. Ma'am, we can start with the next speaker. It's there already in the screen. Yeah. Okay, okay, sir. Okay. Now I would like to request our special invitee, Sovan Mukherjee, sir, CISO Finance Bank. Hi, good afternoon, everyone. As a CISO, Chief Information Security Officer of a bank, which is one of the critical part or one of the critical infrastructure for the country, I think nothing is more enjoyable day than me this today, this evening, when we are running into a new journey. We have seen that India has become a major a part and partner of the IT or digital transformation across the world. And all the powerhouses will start from any top 50, top 500, top 100, Google, Amazon, everything. The power hub, the people who are working and delivering, developing those things is basically India. India has proven out to be one of the best IT talents in the world. Not only in India, if you see the major bigger companies in the world is being at the helm is some Indian, be it Google, be it Twitter, be it IBM, be it anywhere. One thing which transpires is that in the digital world, where the pandemic has accelerated the digital journey, it's also become proved out to be a cyber pandemic. Due to geopolitical situation, due to mental mindset, due to people losing their jobs,
the attacks on critical infrastructure or day-to-day lives or in terms of frauds has increased very much. So when the digitization has taken I say 20x fold in the journey, the growth, we don't have sufficient manpower to secure the environment. And it is not that few people who are in the cybersecurity or information security field will be able to protect that. We need people who are developing security shift left. What I say, people who are developing should develop secure, who are building parameters, building in IT applications or whatever they should, and that should start from the university or college level when people are given that basic elementary this engineering degrees. If they understand the security part and then they imbibe, 90% of the cyber security vulnerabilities will be mitigated. Still, from 90s, we are seeing the biggest vulnerability as SQL injection. All databases and all this, and still it is keeping continuing. Because when I am doing my MTech as a cybersecurity professional, I have seen that nobody knows that it has never been taught that there are some SQL vulnerabilities. So I think today is a wonderful day where the security will be imparted as part of the degree courses, and people when they learning different coding or IT application architecture and all these things, that security mindset will be built up from the bud, and it will help a long way. It is having a huge ramification, and I congratulate Vice Chancellor Sir and entire faculty to take up this as a pioneer in all the universities. And it's a wonderful, I say, yeah. The number of professional required in cybersecurity field in that is humongous, more than 3 million, at least in India, and we are not getting talented manpower. So if there is a huge supply demand deficiencies, and if that can be taken up by the universities at the bud level, I think nothing better than that. And we are waiting for those manpower to come into the field so that we will have that opportunity to imbibe them into our system. Thank you. Thank you so much, sir. Hope we, after this MoU signing ceremony and after the implementation of all these things, we with our students can fulfill the requirement of all things you have said in your address. So again, thank you very much, sir. Now, अर्चना जी 1 मिनट हमारे बीच में हमारे बालकृष्ण बर्नवाल जी जो वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर उपलब्ध हैं अभी, और मैं देख रहा था अभी अब आप स्क्रीन पे हैं, तो मैं चाहूंगा बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर, what Suvan ji has already mentioned, same way, and Balkrishan Barnwal ji was delivery head of global delivery head of TCS, and then he is part of governing council of BID Sindri. So I would request Balkrishan Barnwal ji to take the opportunity to really talk about what the industry is looking for and wherein we stand on cyber defense training program. Balkrishan. बालकृष्ण आप अपने को अनम्यूट कर लें. बालकृष्ण आप अपने को Are you able to hear me? Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, on 2nd of April in Mumbai, the Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray, he inaugurated a metro service train from 2A and 7 line, and these trains are driverless. This will work completely on microprocessor-based systems, control systems which are there, and all of these will have a basically vulnerability if it is not designed well. So today the cyber crime and cyber issues are going to affect not just the IT systems, but it could be in your infrastructures, in your power lines, in your utilities, it could be in the railways and many other systems that will all affect us. That will affect us all. So coming from the industry perspective, sometime back, there used to be a separate systems where we talk about high availability features, or we talk about the
database security or access security, end user point securities. These were important. But now as we go and build systems which are most of the systems will be basically available to the consumers at large. It will be internet based systems. So the number of access points are going to be millions and billions. And we need to, protect against any possibility of any one of them trying to hack into the systems. So one of the best course that I have come across is Cybervidyapeeth, Cyber Rakshak program, where they basically teach every students how to understand the offense whereby somebody is hacking into your systems with various tools, and you understand that exposes the vulnerability of existing systems, and thereby with the full knowledge of vulnerability you build a defensive systems. And while doing this build, you build all your tools yourself. These are not licensed software where you will require from to be bought out from the expensive vendors, but these are something that you will build yourself, learn the process of doing the defense of all the systems. And this team has already helped basically power ministry and all the departments attached to the power ministry in terms of training their associates, training the people, build link with SCADA systems or IT systems, how to understand the various vulnerability, how to build the defense, and also try and see if there is anybody else who can do the offense on that. So it's a great course. And the beauty of all of these is that for the students, it's going to be a probably nominal charge or no charge at all. So that makes it even more, it's beautiful that the institute and the students may not have to pay substantial amount to get this competency, which is required by all the IT services companies, as well as even the user company, where there is a automated systems, control systems, and microprocessor based applications are present. All of them will require these services. So I thank all the organizers, Sasank, Balaji, in organizing this event, and my full support to this. And going further, we can continue to be engaged. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your informative words. Now, I would like to request Mr. Shashank Shekhar Gauriar to give the information about Cybervidyapeeth Foundation and MoU. Sir is industry expert and chairman of Cybervidyapeeth. Sir, please. नमस्कार आप सबों को यह कहते हुए कि नवीन शिल्प मधुर शैली नया रस दे दे, नवीन शिल्प मधुर शैली नया रस दे दे, मन के कुंदन को जो चमकाए वो पारस दे दे, पूजने आए गगन वाले मेरी धरती को, पूजने आए गगन वाले मेरी धरती को, माँ मेरी माटी को वो साहस दे दे, माँ मेरी माटी को वो साहस दे दे। आज भारतवर्ष जिस स्थिति में जिस माने पे खड़ा है, and you must be knowing like what the war situation, the kind of learning what we are getting because of Russia, and people say Ukraine war, but we say it is NATO versus Russia war, and lot of learning we are getting. अगर आज हमारे साथ ऐसा होता तो हम कहाँ पे खड़े होते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफी समय से कुछ सोच रहे थे कि like what way we should be preparing ourselves and organizing ourselves, our students, our faculty, our available resources who are working with the corporate world, how they can be upgraded, still upgraded to that level wherein they are up to the mark, and rather they are protecting their infrastructure and all. तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी मुलाकात की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2022 को हम लोग मिलते हैं हजारीबाग में, एंड थैंक्स टू वाइस चांसलर सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर देव साहब, आपने हम लोगों को मौका दिया। और 28 फरवरी से आज हम लोग 6 मई पे बैठे हैं और हमारा ये MoU साइन होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द seriousness of sincerity of purpose what Vinoba Bhave University was having behind this particular training and education program for cyber defense training.
तो इसके तहत हम लोगों ने 2-3 एरिया को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मेन एरिया हमारा था कि लाइक इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल ट्रेनिंग हो। दूसरा हमारा इंसिडेंट रिस्पांस, डिजिटल फॉरेंसिक एंड मैलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो, and training the trainers का program for which should be taking care of the professors of engineering institution and polytechnic colleges across northeast eastern region of on cyber defense, covering the syllabus of and covering the BTech program of AICT too. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और इसी में हम लोगों ने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर डिफेंस प्रोग्राम के लिए भी बातें की और साथ में अभी हम लोग जो 3 एरिया में कवर कर रहे थे उस 3 एरिया में काम भी कर रहे हैं। वन वाज लाइक ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स व्हिच वाज डायरेक्टली व्हाट वी वर डूइंग एज ऑफ नाउ, training the students of around you can say 3000 plus. We engineers have already taken the training program for 6 months each, and now they got the job also. And when we were asking like what kind of job they were being offered earlier when they were simple graduate from that engineering college, and what they have been offered after getting this particular training, it was really mind-boggling. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जैसे भारतवर्ष की स्थिति 95 से लेकर 2002 के बीच में थी कि पूरा विश्व देख रहा था कि कहां से ये स्पेस सॉफ्टवेयर वाला स्पेस जो है इसकी भरपाई कौन करेगा, और भारतवर्ष के लोगों ने उस स्पेस की भरपाई की क्योंकि हमारे पास जनसंख्या और यंग भारत हमारे पास अवेलेबल था। तो यंग रिसोर्सेज होने के चलते हमने उसकी भरपाई बहुत अच्छे से की और अभी फिर से हमारे को एक मौका मिला है जिसमें अगेन एज पर माइकल पेज जो आप सुने होंगे, इनके रिपोर्ट्स भी कहीं देखने को आपको भी मौका मिला ही होगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टिंग कंपनी है ह्यूमन रिसोर्सेज में। उन लोगों ने ये बताया हुआ है कि उनके पास 31 लाख यानी 3.1 मिलियन रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल है जॉब अपॉर्चुनिटी, whereas there is no taker as of now। तो उन लोगों के इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि अब 31 लाख देगा कौन, तो आपके पास 2 ही देश है जो जनसंख्या के मामले में उस ढंग से और यंग के मामले में अगर कहें तो भारतवर्ष है। तो हम लोगों ने अपनी तैयारी उसी के लिए ये शुरू की कि कैसे एक लार्ज पूल ऑफ मैन पावर हम लोग खड़ा कर सकें, और दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन, एंड दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि ये कोरोना ने सभी को ऑनलाइन पढ़ने का सिखाया। हम लोगों ने उसी ऑनलाइन की व्यवस्था को फिर थोड़ा, क्योंकि उसके जो लूप होल्स थे उस पे हम लोगों ने भरपाई की थ्रू मशीन लर्निंग टूल एंड अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो 5E लर्निंग मॉड्यूल है उसको भी हम लोगों ने बिल्ट इन किया ताकि हमको ये समझ में आए हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ हैं, रेगुलरली वो साथ हैं, नहीं है, उनका किस ढंग का माइंडसेट चल रहा है। सो कंप्लीटली मॉनिटरिंग देयर एक्टिविटीज through a payload what when we sign off with the student we pass on the payload on their system, and that is how we are taking care of। तो ये सारी व्यवस्था में आज ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि पूर्वी भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स स्टार्ट करने वाला यानी MoU साइन करने वाला तो एक है ही है, लेकिन कोर्स चलाने की शुरुआत करने की मनसा बनाकर आगे बढ़ने वालों में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आज पहला मतलब मैं तो अभी तक मुझे जो भी अपने गूगल करने के बाद दिखाई दे रहा है पूरे पूर्वी भारत में कहीं भी साइबर सिक्योरिटी पे कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, and you are the first to launch this program, so thank you all। With this I would request our chief mentor Sri Balaji Venkateshwar also to really give few more details about it so that people are knowing what exactly was the brain behind which brought us together and brought VBU and then Cybervidyapeeth together to launch this kind of a program। Balaji। आप लोगों को मेरा नमस्कार। बड़ा अद्भुत मौका है जब अपने घर से आप काम स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है लोगों को साइबर डिफेंस के एरिया में। मैं याद है मुझे 30 साल पहले जब मैंने हैकिंग का काम शुरू किया था तो लोग मेरे पे हंसते थे, बोलते थे यार ये क्या कर रहे हो आप,
अब हर समय कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, क्या देखते हो इसके ऊपर? तो मुझे लगता था कि भविष्य जो जैसे-जैसे कंप्यूटर बढ़ेगा, ये चैलेंज तो बढ़ेगा और ये अपॉर्चुनिटीज होगा बहुत लोगों के लिए। लेकिन जब मैं लोग को बोलता था, मेरे परिवार के लोग सारे बैंकर्स थे, रिसर्चर्स थे, पीएचडीज थे और वो मेरे को देखते थे कि क्या बेवकूफ की तरह कंप्यूटर लेके बैठा रहता है। 30 साल में जो परिवर्तन मैंने देखा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस स्पेस में आई है। और हम लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी काम किया। समय से पहले मैंने छोड़ दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, नहीं अब जो कुछ सीखे है ना, समय है इसे ज्ञान दान करने के लिए, बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को बेटर करने के लिए। और हमारे साथ चतुर्वेदी साहब हैं, वो डिफेंस के काफी बड़े शख्सियत है, वो उस पे अच्छी डिटेल्स बताएंगे। मैं बात को यही खत्म करता हूँ, लेकिन आज एक बड़ा अद्भुत दिन है। शशांक जी धन्यवाद जो आपने मेरे को ऐड किया। आज के सेशन में मैंने अवॉइड किया था, लेकिन ये एक अच्छा दिन है जहाँ मिलियन लोगों की जरूरत है और झारखंड में करीब बीसीए, एमसीए और बीटेक की यदि संख्या देखेंगे ना, जो झारखंड में रहते हैं उनकी संख्या भी करीब 60 से 70 हजार के करीब में है। यदि हम उसके 10% को मार्केट टैप करेंगे तो ये झारखंड के लिए भी जो एक बिजनेस का बड़ा अपॉर्चुनिटीज बढ़ के आएगा और बच्चों के लिए तो एक अच्छे भविष्य का डेफिनेटली कामना करेंगे, क्योंकि वो बच्चे ही हमारे देश के भविष्य। हम लोगों ने तो जो करना था वो कर लिया, अब अच्छे बच्चों के हाथ में छोड़ के जाना है, तो एक अच्छा समय आ रहा है। आप सबों को मेरा धन्यवाद और ऐसा अद्भुत अपॉर्चुनिटी मुझे सुनने के लिए। सुमित्रा मैम। Thank you so much, sir. Now it's time for the virtual exchange of signed Memorandum of Understanding. Thank you so much, ma'am. You know, it's a really an auspicious occasion that MoU is formally signed and exchanged, and really the leadership role that VBU is playing on that, I'm sure it is going to change the future of Jharkhand altogether, not just some students, but the future of Jharkhand altogether. तालियों की आवाज तो बनती ही है। This is not only an auspicious occasion, this is revolutionary occasion. आज के डेट में आप एक साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन 4 दिन का करने जाओगे, it will only cost ट्रेनिंग का 60 to 70,000 रुपीज। I've also undergone। अगर उसका सर्टिफिकेशन कॉस्ट भी आप लगा लो तो मिनिमम 4-5 दिन में आई हैव टू पे 1.5 लाख रुपया। यही अगर बड में डाल दिया जाए तो ये सब सर्टिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। बच्चे जब कोडिंग सीखेंगे तो उसको कैसे सिक्योरली, जैसे बच्चे हम बचपन में चलते थे, बेटा लेफ्ट साइड पे जाना, बेटा दोनों साइड देख के जाना, अगर यही चीज बच्चों के अंदर कॉलेज लेवल में डाल दिया जाए, आई एम टेलिंग यू this university is going to revolutionize. Many more universities will follow the same direction. This is a humongous step. Thank you, Sohan ji. Thank you. Thank you, sir. Really, we all feel this pleasant moment. Now, I would like to request our chief guest, Lieutenant General V.K. Chaturvedi sir, for his blessing in this moment. Sir, thank you, Archana ji. Thank you very much. Dr. Mukul Narayan Dev, the Vice Chancellor, Vinoba Bhave University, Dr. Arun Kumar, Department of Higher and Technical Education, Sohan Mukherjee, we just heard him, Dr. Kameshwar Prasad ji, the Director, Vinoba Bhave University, Professor Arun Mishra ji, again from Vinoba Bhave University, Shashank Shekhar ji, from the Cybervidyapeeth who just spoke, and my dear friend Balaji, who is the real force behind this initiative, and Bandwalji, whom we also heard. It's a great pleasure for me to be amongst you today in this elite group of intellectuals and technologists. I am basically a soldier, so I'll be mostly talking from the point of view of how it affects the armed forces, and also keeping the children in mind, who I am told
are also on the YouTube with us. ये एक बहुत ही, जैसा आप सबने भी कहा है, कि ऐतिहासिक क्षण है जब इस तरह का MoU साइन हो रहा है और दो ऐसी संस्थाएं साइन कर रही हैं जिनका कि बहुत अच्छा नाम है। और सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे हो रही है कि ये हजारीबाग हमारे झारखंड की एक यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं झारखंड में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी आज हमारे भारत का वो अग्रणी देश प्रांत नहीं है और उसको बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे मालूम है कि झारखंड ने हमको एल्बर्ट दिया है, बिरसा मुंडा जी दिए हैं, झारखंड ने ही हमको MS धोनी दिया है, दीपिका जो हमारे जो तीरंदाज दीपिका जी को दिया है। और पोटेंशियल में खुद काफी घुमा हूँ झारखंड में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, युवा में जो आज मैं कहता हूँ एक जो जज्बा है देश के लिए करने का, वो एक अतुलनीय। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो कि कल के भारत के लिए, बल्कि आज ऑलरेडी, जैसा कि आज मेंशन भी हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर में, इसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है और सभी जो भी एक अच्छे आर्म फोर्सेस अपने आप को कहलाने के हकदार हैं विश्व में, वो सब इस पे बहुत तीखी नजर से देख रहे हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का साइकोलॉजिकल वॉर, एसिमेट्रिक वॉर, हाइब्रिड वॉर, इन सब का प्रयोग आज आप ये पिछले 40 दिनों से यूक्रेन में देख रहे हैं। किस तरह से इन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर का इस्तेमाल किया है, किस तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को फेल किए हैं, किस तरह से मिसाइल्स को मिसडायरेक्ट किया है, किसी तरह से एयरक्राफ्ट भी। और ये सब चीजें, ये साइबर जो एजुकेशन है, साइबर सिक्योरिटी की जो एजुकेशन है, ये सिक्योरिटी इज वन पार्ट, जो पूरा वर्ड साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी बहुत है। सिक्योरिटी का मतलब एक थोड़ा डिफेंसिव मीनिंग हो जाता है, लेकिन जब आप इसको पूरे सेंस में देखेंगे तो इसमें डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों है। और जहां पे ऑफेंसिव होगा उसका काउंटर भी होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए। तो रिसर्च की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी और आई हैव नो डाउट कि you will produce the research scholars out of these bright students that you are going to target. आज शशांक जी ने भी बताया कि there is a large scale deficiency, 31 lakhs as on date, and in another 2 to 3 years करीब 1 करोड़ के करीब डेफिशिएंसी इस क्षेत्र में होगी। तो स्कोप भी है, ये नहीं कि केवल आप एक डिग्री प्राप्त कर लेंगे या साइबर सिक्योरिटी का आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देंगे तो जैसे कि हमारे IT क्षेत्र में सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, इन लोगों ने अब एक मुकाम हासिल किया है, वो दिन दूर नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत के आप में से जो युवा हैं, ये लोग इसी पायदान पे पहुंचे होंगे। भारत ने कभी भी आप अगर देखें तो दूसरे के ऊपर गलत तरीके से हमला नहीं किया है, किसी प्रकार का वो जो कहते हैं नुकसान पहुंचाने की कभी भारत की नीयत नहीं हुई। लेकिन भारत अपने आप को हर प्रकार के खतरे से बचाने के लिए सशक्त है, सक्षम। और यही इन जो बच्चे हैं इनको इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल का जो विश्व होगा वो इस तरह का जो आज यूक्रेन में हो रहा है या और भी जगह बहुत जगह हो चुका है, इससे बढ़ेगा ही, इससे कम नहीं होगा। तो हमारे भारत के चारों तरफ आप देख लीजिए, किसी न किसी प्रकार की अशांति आज फैली हुई है, लेकिन भारत
क्योंकि शांतप्रिय देश है, सक्षम है, सशक्त है और हमारी लीडरशिप एक बहुत अच्छे हाथों में है। इसलिए आज भारत की तरफ पूरा विश्व देखता है। हर आदमी समझता है कि अगर मध्यस्थता कोई कर सकता है यूक्रेन में तो केवल भारत कर सकता है, क्योंकि बाकी सबका किसी ना किसी पार्टी के साथ झुकाव है। एक देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि पुतिन तो बूचर है, तो हाउ कैन ही बी ए मीडिएटर? वो तो कभी इसी तरह का मीडिएशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं। भारत ने इस पूरे संदर्भ में बहुत ही अच्छा काम किया है और लर्निंग भी बहुत है। हमारे लिए बहुत से लेसन्स हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस पिछले आज मैं समझता हूँ 20 या 22 साल से एक साइबर सिक्योरिटी कमांड की जरूरत फील कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ही एक उसकी बिगनिंग हुई है। साइबर कमांड तो अभी मैं नहीं समझता इतनी जल्दी आएगी, लेकिन शुरुआत हो गई है। एक न्यूक्लियस बना दी गई है और उसके ऊपर अब बिल्डिंग बनेगी। और इसके में अगर आप देखें, आज आप देख लीजिए सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे एवियोनिक्स, सारे नेविगेशन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम, गन के कंट्रोल सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में साइबर की जरूरत है और इससे प्रभावित होते हैं। तो फील्ड इज वास्ट एंड रिक्वायरमेंट इज आई कांट प्रेडिक्ट टुडे कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ईच वन ऑफ यू हैज टू रियली डिवोट, टेक इंटरेस्ट, and I request Balaji and Shashank Shekhar ji to spread this knowledge all across India. Take it to each and every nook and corner. Go to Northeast, go to those areas which are deprived of good education. This will be the greatest national service. आज आपको मैं बहुत खुशी है कि एक ऐसी फील्ड का जो आपने शुरुआत की है वो उस इलाके से की है जहां पे गुड एजुकेशन, अगर आप दिल्ली और महाराष्ट्र और पूना वगैरह से अगर कंपेयर करेंगे तो उसका अभाव है वहां पर। और उस जगह पर आप जब इस तरह की शिक्षा देंगे, ये बच्चे कल को विश्व में जाएंगे तो वो अपने जो अपना देश है, अपना प्रदेश है, अपना प्रांत है, अपना जिला है, उसको जरूर दोबारा आकर विजिट करेंगे एंड दे लाइक टू गिव बैक टू दैट प्लेस। मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं जस्ट फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि चिल्ड्रन आर हियर, बच्चे हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हर बच्चे में इंस्टिल करनी पड़ेगी हमको। कुछ समय से मैं समझता हूं एक जनरेशन जो 80s से लेकर आप समझ लिए 2010 और 14 तक ले लीजिए, इस जनरेशन में हमने बहुत कुछ खो दिया। जो 2016 में जेएनयू में हुआ वो अब कभी रिपीट नहीं होना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी आप मेरे प्यारे बच्चों पर है और हम सब पर है कि हम भारत के इस युवा पीढ़ी को इतना वो जज्बा दें, उनको इस राष्ट्रभक्त, राष्ट्रहित और देशभक्ति के बारे में बताएं कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो शब्द दोबारा हमको कानों में नहीं सुनने पड़े। आज भी पीड़ा होती है, बहुत दुखदाई क्षण था वो, और वह कभी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मैं एक बहुत पुरानी कविता है उसको जरूर रिसाइट करूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। ये बहुत बड़ी चीज है, हमको हमारे मैं समझता हूँ 5th या 6th क्लास में पढ़ाई गई होगी, आज भी याद है। और ये इस तरह की कविताएं, इस तरह की जो कुछ महानुभाव हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है, बिरसा मुंडा जी जैसे हैं,
इन लोगों के बारे में हमको बताना पड़ेगा सबको, उनमें ये भाव जगाने पड़ेंगे, तभी भारत को एक अलग पायदान पे आप लोग ले जा पाएंगे। दूसरा, हमारी जो परंपराएं हैं, खूब ज्ञान हासिल करो, खूब आधुनिक बनो, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जो बेस्ट है वो प्राप्त करो। बट जब परंपराएं की बात आती है, परंपराएं हमारी अपनी हैं, हमारी पहचान है, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, ये सब हमारे अपने, और इनको कभी नहीं छोड़ना है। वी हैव टू इंश्योर ये जीवित रहें, ये हर हालत में, विश्व में कहीं भी आप हो, अपना पहनावा, अपनी बात, भाषा, अपना रहन सहन, अपने जो मित्रता और सौहार्द और गुडविल का एक हम लोग चरित्र पेश करते हैं, हमारी रीति रिवाज, हमारी तीज त्योहार, इनको मनाना कभी ना भूलें। ये आपको पहचान देंगे, ये आपकी रेस्पेक्ट और आदर सम्मान को बढ़ाएंगे पूरे विश्व में, और भारत का सम्मान तो बढ़ेगा ही। लास्ट में मैं केवल आप सबको अपनी गुड विशेस देता हूं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय Cybervidyapeeth, and I must compliment Vinoba Bhave University, which has taken such a step to create a facility for their students in Jharkhand. It is going to be a path-breaking initiative and will create history. Let us only keep one thing in mind, कि जो हम करेंगे वो देश के लिए करेंगे। ये भारत हमको जान से भी प्यारा है, और ये जितने भी बच्चे हैं, मैं इन सबको अपनी बेस्ट विशेस देता हूं। लर्न, एजुकेट योरसेल्फ and become competent to face the world, and day is not far off when you will reach the top and you will ensure that our nation, our Bharat is also कीर्ति और यश के सर्वश्रेष्ठ पायदान पर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। अब हमारे बीच प्रोफेसर अरुण कुमार, डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन भी आ गए हैं। मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगा कि अर्चना जी आप प्रोफेसर अरुण कुमार को डालें। Now I would like to request our special invitee, Dr. Arun Kumar, Director, Department of Higher and Technical Education. Sir, please. Good afternoon to all. It's my pleasure to be part of this function. And UCET was my dream, and it will continue in my heart, because I have seen it from establishments onward, and it is continuously putting hard effort to come up. Few days back, we had met Cybervidyapeeth Education Foundation members, and they proposed that we are going to have such kind of activity in Vinoba, Bhave and some other institutes. And today I came to know that it is of first kind in Eastern India, whereas our students are concerned from UCET. They are doing very well, and also the preference is after BIT scenery, it is UCET only. I had taught this institute in different mode, which is not under the control of government, but it has got full autonomy to frame the syllabus and do all activities as they require. Now, according to NEP also, there should be flexibility. I hope that after certification, if the university will give some credit, it will be beneficial for the students also for their qualification.
and which is possible also because it is the part of new education policy and university can adopt all these things. Whereas cyber security and cyber technology is concerned, it is the part and parcel of day-to-day life activity. No activity can be neglected, and here would be listening every day there was cyber attack on such organization. Whereas India is concerned, it is maintaining good ability and also providing support to other countries, and we are having young generation which can do far well, and I hope that this kind of courses at Hazaribag will not only benefit university students, but also students from other colleges may also join, and hope that this will benefit the whole society, and this will improve the quality of education also. There is also requirement to have more MoU and more interaction with the industries. I am also listening cyber attack, but I am not knowing how this cyber attack is working and functioning in the system. Now students will be getting exposure, and it will help them to know the industry activity, because in institutes students are confined only to theory part and they do not have industrial exposure. This will give an opportunity for the industrial exposure. I hope that this training will also take to the real world for their proper training and certification. I hope that this course will be a boon for the Hazaribag area students, and large number of students will be associated in this training program. I wish all success for this program, and thank you for inviting me to be part of this function. Thanking you once again. We are privileged, sir. We are privileged. Thank you, sir. So much, sir. And as you mentioned, the students, after getting this type of platform, the student will surely prove their skill. Thank you so much again. Now I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Mukul Narayan Dev sir, former head, AMPD. Recording in progress. Have some sound problem has come. सर ऑडिबल है सर आप? Now is okay. आवाज मिल रही है सर, हाँ, आवाज can मिल रही है। hear you. Okay. Thank you, Archana ji. Chief guest of today's function, Lieutenant General Vishnu Chaturvedi ji, Dr. Arun Kumar, Director Technical Education Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, Shri Sovan Mukherjee, CISO, FinCare Bank, Shri Sasank Shekhar Surumyan ji, Shri Anup Kumar Mishra, Ms. Geeta Sinha, students and other participants of this MoU signing ceremony. Good afternoon to everyone. As we know, cyber security is a discipline that covers how to defend devices and services from electronic attacks by nefarious actors such as hackers, spammers, and cyber criminals. So we can say that cyber security study programs
teach us how to protect computer operating system, networks, and data from cyber attacks. So we can learn how to monitor systems and mitigate threats when they happen. Without cybersecurity professionals working tirelessly, many websites would be nearly impossible to enjoy due to ever-present denial of service attempts. I can also say that IT security is still a relatively young discipline. Universities and colleges are still figuring out which is the best approach for their degrees. Today is an important day in the history of Vinoba University, as we are going to be the first university in the eastern region of India to start courses in cyber defense or cyber security. Vinoba University, Hazaribag, which was established in the year 1992, being among the one of the premier university of Jharkhand. It offers high standard of teaching and research, and the university has taken a step further to tap the opportunities available in the field of cybersecurity. As an affiliating university has to serve a number of functions for all their affiliated institutions, including managing admissions and examinations, setting curricula, and granting degrees. But if we look around today, we find that there is a mismatch between the graduate skill set and the industry demand. In terms of outcomes, there are three key areas of concern: employability, research, and equity. The problem of unemployability and poor technical skills of the recent graduates is prominently because of the following important issues in technical education, like faculty shortage, industry academia collaboration, absolute learning infrastructure, curriculum reforms, student learning assessment. The Vinoba University has taken steps to address these issues. The signing of MoU with Cybervidyapeeth is going to play an important role in industry academia collaboration. In this way, we will try to promote education and training in this domain to strengthen the India economy. Further, we are planning to start BSc in AI, artificial intelligence, machine learning, data science, right from the July 2022. All these initiatives are going to help in the career building of our students. With these words, wish you all the best for future endeavors, and thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Hope with your supervision and leadership, we will achieve the goals of this event or this task. Thank you so much. Now, I would like to request Professor Ranjit Kumar, Head of Department ECE USET VBU, for vote of thanks. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to offer vote of thanks on this special occasion of MoU signing. First of all, I would like to offer a big thank to Honorable BC Professor Dr. Mukul Narayan Dev sir, because of whom the MoU became reality to input quality education in the field of cyber defense. I would like to extend my sincere thanks to Pro Vice Chancellor Professor Dr. Ajit Kumar Sinha sir for his valuable guidance and time. I would like to thank
from bottom of my heart our chief guest, Lieutenant General Padma Shri V.K. Chaturvedi sir. Thanks a lot, sir, for your courageous work. Our special invitee, Director Higher and Technical Education, Jharkhand, Dr. Arun Kumar. Thank you so much for your precious time and enlightening on the field of cyber defense. I would like to thank Mr. Shravan Mukherjee, Chief Information Security Officer, FinCare Bank. Thank you, sir, for your time and talk on the cyber defense uses. I would like to thank Mr. Sasank Sekhar Buriyar, Chairman Cybervidyapeeth, and Mr. Balaji Venkateswar, Chief Mentor Cybervidyapeeth. I would like to thank Mr. Balakrishna sir for delivering talk on industrial aspect of cyber defense. In addition, I would like to thank our Director UCET, Dr. Kameshwar Prasad sir, and all the university officials. I would like to thank all the dignitaries who joined through virtual mode, and I could not name that. Sorry for that. A special thanks to Professor Arun Kumar Misra for his sincere effort to organize this event, and Mrs. Archana Reenadhan for nice anchoring the session. I would also like to thank Professor Suvir Kumar and Mr. Sambhu Prasad for their technical assistance. Once again, I would like to thank all the guests, invitees, dignitaries, university officials, faculty members, media persons, non-teaching staffs, and students. Last but not the least, I would like to thank all who directly and indirectly associate with this event, virtual event of MoU signing to make it grand successful one. Thank you everyone. Have a nice evening ahead. Over to the Archana ma'am. Thank you, sir. Now we will come to the end of this event, and by the order of our Honorable Vice Chancellor, we may end the session. दो लाइन में ऐड करना चाहूंगा। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो भारत हमारा देश है। Very well done. इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद। Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot, Jain sir. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thanks a lot, Sasank ji. Thanks sir. Very much. Jain sir. Recording stopped. Balaji, sir.